Hello, what's up YouTube? Welcome back to my channel EduPilots. So guys, I've planned something for you all that on Monday, Tuesday I'll be uploading videos of political science, Wednesday, Thursday of economics and Friday, Saturday of geography. English and physical education will be uploaded day by day as and when I'll be able to complete the topics. And hence we'll start with economics today. So we are going to start with the first chapter of macroeconomics, that is introduction of macroeconomics. I am using the book of V.K. Ori, T.R. Jain. So you can use any of the books, the content will almost be the same. You just have to listen to me very carefully and your entire topics will be covered. So the topic is, first topic is meaning. What does macroeconomics mean? So we studied about microeconomics in class 11. So microeconomics was on a smaller scale and macroeconomics is on a wider scale. In class 11 we did about consumer supply, consumer demand and all such things. Now we are going to do aggregate supply, aggregate demand, income, employment, inflation, deflation and all such concepts. Okay. So if we look at the definition of macroeconomics, I'll write it here. When the concepts of microeconomics are studied on a country-wide parameter involving the global economic influence factors, the study is known as macroeconomics. Okay, country-wide we'll take. Okay, the main motive of macroeconomics, or the question to which macroeconomics answers, is that which is related to the welfare of the residents of a country. I hope we are clear with this concept. Now we'll move to the next one. So now the next topic is, how is microeconomics different from macroeconomics? I would give you an answer writing tip over here. Whenever you have a question that is related to differentiation, what you'll do? You will make three columns, okay? Making two lines and dividing the entire sheet into three parts. And on first column you'll write basis. Second, microeconomics. For example, we are differentiating between micro and macroeconomics. So here we will write basis, here microeconomics and here macroeconomics. Done with this. Now we will write this. Now I am going to explain it to you and you will be clear कि कैसे लिखना है. And don't worry about the notes. I will attach a PDF in the description box which will be related to the notes of the topics which we did in the videos, and I will do the same in every video. So we will do this now. Here the basis of study in microeconomics. What does microeconomics and macroeconomics study? It studies the problem of scarcity. Okay, so it studies the problem of scarcity and allocation of resources at the level of individual, and this macroeconomics studies the problem of scarcity and about resources at the level of an economy as a whole. The second point is economic variables. In microeconomics there are variables like individual demand or supply, but in macroeconomics we have aggregate demand and aggregate supply and many such factors or variables like this. The third basis is economic agents. So who are economic agents? Economic agents involve the individuals or the institutions that take decisions which are related economically. Okay? In microeconomics the main agenda or the main goal is maximization of personal gains, and it in this economic agents may be individual or a consumer, and at macroeconomics the goal is to maximize social welfare, and it involves institutions like RBI, SEBI, TRAI. So you just need to learn the full forms of this. This can also come. Next point is set of assumptions. Different set of assumptions are there. So in microeconomics, macro variables are considered to be constant, but in macroeconomics, micro variables are considered to be constant. So for example, in microeconomics, total output and employment is considered to be constant, but it plays a very important role in macroeconomics. In the similar way, in macroeconomics, distribution of income or output is considered to be constant, but it plays a very important role in microeconomics. Okay, the next point is central issue. So what is the central issue in microeconomics? We did in class 11 that resources are scarce in relation to the wants, in relation to the desires which people have. Okay, so the main or the central issue in microeconomics is the allocation of resources. How to allocate different resources to different sectors.
and in macroeconomics, determination of overall level of output is the central issue. Okay, so the next point is method of study. So method of study in microeconomics is concerned with partial equilibrium analysis or equilibrium in one market on the assumptions that there is no change in other markets. And in macroeconomics, the method of study is general equilibrium analysis. It is the simultaneous equilibrium in all other markets. Okay, सभी markets की equilibrium simultaneously देखी जाएगी. So this is the assumption. There are few more pointers you can add in, but ये differentiation में बहुत ज़्यादा importance hold नहीं करते. अगर आपको सिर्फ points wise पूछा जाए, so you can add them. First is degree of aggregation. So there is a limited degree of aggregation in microeconomics, but there is a wider aggregation in macroeconomics. Okay, so the next point is micro paradox. Macro paradox में क्या है कि जो चीज़ माइक्रो इकोनॉमिक्स में लॉजिकल है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स में लॉजिकल नहीं होती है. ओके, फॉर एग्जांपल माइक्रो इकोनॉमिक्स में अगर एक इंसान सेव करेगा, सो ही एड्स टू हिज फ्यूचर प्रोपेंसिटी. बट इन मैक्रो इकोनॉमिक्स इफ एवरीबडी सेव्स तो क्या होगा, डिमांड कम हो जाएगी. डिमांड कम हो गई तो इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी. इन्वेस्टमेंट कम हुई तो इंड्यूसमेंट, लाइक जो भी इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके अंदर वो भी कम इन्वेस्ट करेंगे क्योंकि उसकी डिमांड तो हो नहीं रही है. तो अब अगर इंड्यूसमेंट तो इन्वेस्ट कम हो जाएगी, what would happen? एम्प्लॉयमेंट खत्म हो जाएगी and the entire economy would be in a state of depression. So we can see कि macro paradox कैसे work करता है, right? I hope you are clear with this basis of differentiation. You can add this method while doing or attempting your paper. Okay, now we will study scope of macroeconomics. By this term, scope of macroeconomics, we mean कि what is the area of study of macroeconomics. Okay, so the point is number one, estimation of national income and related aggregates. इसका मतलब क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टार्ट ही नेशनल इनकम से होती है. दिस इज जस्ट एन इंट्रोडक्शन एंड फर्दर इन द चैप्टर्स वी नो दैट वी विल डू नेशनल इनकम ओनली. उससे रिलेटेड एग्रीगेट जैसे जीडीपी एट एमपी, एनडीपी एट एफसी, एनएनपी एट एफसी, ये सारे एग्रीगेट्स हमें करनी है. सो macroeconomics is concerned with the estimation of national income and its related aggregates. The point number 2 is theory of employment. So macroeconomics studies about the employment and there are various theories which are related to it. ठीक है, Keynesian theory of unemployment is a very important one. ये जो हमें आगे चैप्टर पढ़ना है, income and employment, that is concerned with Keynesian theory only. Okay, now the next is theory of money. Theory of money क्या है, creation of money by the commercial bank is a very important concept of macroeconomics. आगे हम जो money and banking chapter करने वाले हैं, that would include this concept only. Next is theory of general price level, inflationary and deflationary gaps. Okay, so जो भी हमें यहाँ next point is theory of general price level, inflationary and deflationary gap. So macroeconomics studies at this thing, inflationary and deflationary gap. I told you हमें जो चैप्टर आगे करना है income and employment, उसके अंदर ये inflationary and deflationary gap आने वाला है. So this is just an introduction कि सारी बुक में क्या है, ये चैप्टर पूरा वही है. नेक्स्ट इज रोल ऑफ गवर्नमेंट. आगे जैसे गवर्नमेंट बजट कैसे बनता है, हाउ डज इट इफेक्ट द इकोनॉमी एंड ऑल सच थिंग्स भी मैक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप के अंडर आती हैं. Now the next thing is exchange rate and balance of payment. Exchange rate, like we might have heard, depreciation of currency, appreciation of currency, devaluation of currency, या फिर balance of payment में कि trade balance है या फिर deficit trade है, ये सब चीज़ें जो है macro economics के अंडर ही आते हैं and it is covered under the scope of macroeconomics. Okay, so the next topic which we are going to do is the significance of macroeconomics की importance क्या है macroeconomics की. Okay, number one is description of the economy. अब हमें तीन चीज़ याद रखनी है. national income का chapter, okay, second is income and employment का chapter, unemployment and all, and third is government budget. Okay, इसके अंदर हमें तीन points ही लिखने हैं कि macroeconomics helps in the description of the economy. नंबर वन पे लिख के कि national income and the related aggregates help in knowing the activities in the country.
Number 2 we have to write is about the study of unemployment. Study of unemployment हमें क्या help करेगा? It would help to find out that what is the problem in the economy, है ना? Analysis करने में help करेगा, right? And the third is government budget. अब government budget क्या करेगा? Government budget is a solution to the problems. जैसे सब्सिडीज दी जाती हैं, ऑलराइट, देन ऑल सच थिंग्स, प्रोविजंस गिवन टू द पीपल आर द सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम्स लाइक अनएम्प्लॉयमेंट. ऑलराइट, आई होप वी आर क्लियर विद दिस पॉइंट. नेक्स्ट इज रोड मैप ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. Study of macroeconomics help us to formulate policies and programs better. ठीक है, ये चीज़ याद रखना. नेक्स्ट इज इकोनॉमिक स्टेबिलिटी. इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कैसे अचीव कर सकते हैं? बाय नोइंग अबाउट द मॉनेटरी मेजर्स लाइक वी कैन से बैंक रेट या फिर रेपो रेट या फिर रिवर्स रेपो रेट. इन सब को RBI रेगुलेट करता है, राइट? RBI इन सब को रेगुलेट करता है. इसी की वजह से कंट्री के अंदर वी गेट इकोनॉमिक स्टेबिलिटी. द नेक्स्ट पॉइंट इज BOP स्टेटस. बैलेंस ऑफ पेमेंट का स्टेटस से हमें क्या पता चलता है कि हमारी कंट्री की कंडीशन क्या है, राइट? फॉर एग्जाम्पल बैलेंस ऑफ ट्रेड. बैलेंस ऑफ ट्रेड शोज द कैपेसिटी टू एक्सपोर्ट एंड कंपल्शन टू इम्पोर्ट, कि हमारी कंट्री की कितनी कैपेसिटी है कि वो कितना एक्सपोर्ट कर सकता है एंड कितनी उसको ज़रूरत है कि उसे इम्पोर्ट करना पड़ेगा, राइट? द नेक्स्ट इज प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी एंड एनवायरमेंटल पोल्यूशन. ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स से हमें पॉवर्टी के स्टेटस के बारे में, एनवायरमेंट पोल्यूशन और इन सब के बारे में हेल्प मिलती है. वी गेट टू नो अबाउट इट, राइट? एंड द लास्ट पॉइंट इज पॉलिसी फॉर्मुलेशन. अब गवर्नमेंट बजट और ये सब जो है, इनकी नॉलेज जिसको ज़्यादा है, दैट पर्सन वुड बी एबल टू इम्प्लीमेंट दीज पॉलिसीज़, प्रोग्राम्स विच आर रिलीज्ड बाय द गवर्नमेंट. ऐसी पॉलिसीज प्रोग्राम्स को बेटर इम्प्लीमेंट करने में मैक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प करती है. आई होप वी आर क्लियर विद दीज कंसेप्ट्स एंड नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट वन. सो वी आर लेफ्ट विद वन एडिशनल टॉपिक जो थोड़ा मिसलेनियस काइंड ऑफ स्टफ है. तो ये क्या है? इट इज़ अबाउट ग्रेट डिप्रेशन. ग्रेट डिप्रेशन वॉज अ प्रॉब्लम और अ वेरी सीरियस थिंग विच अकर्ड इन 1929 एंड it involves the countries from the continents of North America हो गया and Europe हो गया. ये वाले जो थे मेजर, यहाँ की कंट्रीज सफ़र किया था. 1929 में ये स्टार्ट हुआ था एंड USA का यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है दैट USA में अनएम्प्लॉयमेंट हैड risen from 3% to 25%. It shot up to 25%. It is a great thing, right? Also, the GDP had fallen by 33%. So you can look at how serious the situation was कि 33% तक अराउंड जो था GDP फॉल हो गया था. ये क्यों हुआ था? बिकॉज पीपल जो थे वो डिमांड कम कर रहे थे चीज़ों की. अब चीज़ों की डिमांड कम होगी तो लेवल ऑफ आउटपुट वुड ऑल्सो बी लेस. कि भाई अगर लोग खरीद ही नहीं रहे, वाई वुड द प्रोड्यूसर इवन प्रोड्यूस द गुड्स, राइट? अब अगर प्रोड्यूसर कम प्रोड्यूस कर रहा है तो उससे क्या होगा? एम्प्लॉयमेंट कम होगी, क्योंकि अब उसको गुड्स ही प्रोड्यूस नहीं करने तो वो लोगों को अपने अंडर क्यों रखेगा, राइट? ही वुड जस्ट फायर देम ऑफ फ्रॉम देयर जॉब. अब इससे क्या होगा? एम्प्लॉयमेंट कम हुई तो GDP कम हो गई. अब GDP कम हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली एग्रीगेट डिमांड फिर से कम हो जाएगी. सो मोस्ट ऑफ द कंट्रीज फेल इनटू दिस विशियस सर्कल ऑफ लो AD, लो आउटपुट, लो एम्प्लॉयमेंट and low GDP and then again low AD, right? I hope we are clear with this concept. If you like the video, please subscribe to my channel EduPilots and just stay tuned to this channel because I am going to post many such videos that would help you. Thank you so much, guys.